Hello students, welcome to your channel. Please like, share and subscribe your own channel, School Studies. School Studies is pleased to announce the launch of our educational website, Patel Section. After years of hard work and dedication, we are delighted to officially announce the launch. Our goal with this website is to provide our students with an easier way to learn their lesson and prepare for exams. The new website is interactive and gives better access to NCERT Solution, GSEB Solution, Kids Zone and General Knowledge courses and quiz. We will be constantly updating our content with helpful information, articles, blogs, newsletters, new course announcements. We hope you find the new website with a fresh look, easy to access information. For any question, suggestion, feedback or comments, please contact us today. Today we will see a video related to NCERT Solution for Class 9, Social Science, History, Chapter 5, Pastoralists in the Modern World. Let's solve textbook exercise. The first question is, explain why nomadic tribes need to move from one place to another. What are the advantages to the environment of this continuous movement? नॉमैडिक ट्राइब एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्यों घूमते हैं? क्या एडवांटेज होता है इसकी वजह से एनवायरनमेंट को? सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. Nomadic tribes move from one location in order to maintain their sustenance and way of life. As they are involved in animal husbandry, the availability of water is paramount to their existence, along with fresh pastures of their animal. When the pasture is depleted, they move to next area looking for new grazing ground. ओके, सो नॉमैडिक ट्राइब जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाते हैं ताकि वो मेंटेन कर सके अपनी वे ऑफ लाइफ. वो इन्वॉल्व होते हैं एनिमल हस्बेंड्री जैसे ऑक्यूपेशन में. इसके लिए उनको वाटर अवेलेबिलिटी काफ़ी चाहिए होती है, जिसकी वजह से, और दूसरा उनके साथ उनको फ्रेश पेस्चर्स ऑफ लैंड चाहिए होता है फॉर देयर एनिमल्स. जैसे ही पेस्चर ऑफ लैंड डिप्लीट होता है, कम होता जाता है, वैसे ही वो दूसरे एरिया में मूव करते हैं ताकि उनको न्यू गेजिंग ग्राउंड मिल सके अपने एनिमल्स के लिए. What are the advantages of the environment are as follow. The environment gets a chance to regrow or recover, thus maintaining the ecological balance of the area. It prevents overgrazing as this will lead to depletion of future grazing grounds. The manure of the animals helps in fertilizing the soil, which will be instrumental in repeating the nomadic process of moving from one location to another a possibility. सो एनवायरनमेंट को एक चांस मिलता है ताकि वो रीग्रो रिकवर कर सके, मेंटेन कर सके उनका इकोलॉजिकल बैलेंस एरिया का. ओवरगेजिंग जैसी चीज़ें जो है वो प्रिवेंट हो सकती है इसकी वजह से. जो एनिमल मेन्योर होता है वो सॉइल को और फर्टाइल बनाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी फर्टाइल होता है सॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस व्हाई द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया ब्रॉट in the following laws. In each case, explain how the law changed the lives of pastoralists. So, wasteland rule. So, wasteland rules. The colonial government considered all uncultivated lands or wastelands as unproductive, as it either generated revenue or agriculture produce. In order to bring this wasteland under cultivation, the wasteland rules were enacted throughout India from the mid 19th century. This land were given to settle select individual with various concessions and encouraged to settle them. Most of these lands were earlier used by pastoralists for grazing. So the expansion of cultivation meant that there was a decline in the number of pasture and a problem for pastoralists. सो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो है अनकल्टिवेटेड लैंड और वेस्ट लैंड को जो है कंसिडर किया एज अनप्रोडक्टिव, एज इट नाइदर जनरेटेड रेवेन्यू. उनसे कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगी और उन पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं हो सकता. इसके लिए उन लोग ने अनप्रोडक्टिव उनको कंसिडर किया. अब वेस्ट लैंड अंडर कल्टीवेशन है, इसके लिए वेस्ट लैंड रूल्स जो है एनेक्ट किया गया पूरे इंडिया के अंदर मिड 19th सेंचुरी से. अभी
ये लैंड्स जो है जहाँ पे जो है सिलेक्ट किया जाता है इंडिविजुअल्स विद वेरियस कंसेशंस, उनको कंसेशन दिया जाता है और एनकरेज किया जाता है कि वो सेटल्ड हो, ताकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ना घूम सके। और बहुत सारे लैंड्स जो है अर्ली टाइम से जो है पेस्टुलिस्ट ने यूज किए थे फॉर गेजिंग, जिसके वजह से जो है एक्सपांशन, कल्टीवेशन का एक्सपांशन नहीं हुआ, डिक्लाइन हो गया, और जो लैंड है पेस्चुअस लैंड वो कम होते गए, और ये प्रॉब्लम्स जो है पेस्टुलिस्ट के लिए बढ़ती गई। फॉरेस्ट एक्ट्स, various forest acts were enacted in order to produce commercially viable timber like deodar or sal. Some trace of forest were declared reserve, which meant pastoralists were denied access to this forest. Those that were classified as protected pastoralists had some customary grazing rights, but their movements were restricted severely. कुछ फॉरेस्ट एक्ट्स लगाए गए, जैसे जो है ये फॉरेस्ट एक्ट्स इसलिए एनेक्ट किए गए ताकि कमर्शियली जो टिम्बर है जैसे दियोदर और साल वो प्रोड्यूस कर सके वो फॉरेस्ट के अंदर। कुछ फॉरेस्ट जो है जहाँ पे डिक्लेयर किया था एज ए रिजर्व्ड फॉरेस्ट, वहाँ पे पेस्टुलिस्ट को बिल्कुल अलाउड नहीं था कि वो वहाँ पे जाए, और जो क्लासिफाइड किए थे एज ए प्रोटेक्टेड तो वहाँ पे वो जा सकते थे फॉर गेजिंग, राइट्स थे उनके पास, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्टेड था उनके मूवमेंट्स में। These laws were enacted as the colonial authorities believed that gazing destroyed roots and depleted the fertility of the forest. It affected the pastoralists in the sense that their movements were restricted with specific timing to control how much time they spent in the forest. One can safely say their life were ruled by the permits of the forest departments. ये लॉ इसके लिए अनेक्ट किए गए थे कॉलोनियल अथॉरिटीज ने, ताकि क्योंकि वो बिलीव करते थे कि गेजिंग की वजह से जो है रूट्स पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फर्टिलिटी जो है फॉरेस्ट की वो भी कम होती जाती है। अभी जो इसकी वजह से पेस्टोरलिस्ट जो है काफ़ी अफेक्ट हुए हैं, उनके मूवमेंट्स कुछ टाइम स्पेसिफिक टाइम के लिए ही वो लोग अलाउ किए जाते थे और कंट्रोल किया जाता था उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फॉरेस्ट में स्पेंड करना उस पर। अब एक वन कैन सेफली से कि उनकी लाइफ जो है रूल की गई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। Next, criminal tribe acts. The British authorities regarded nomadic people with suspicion and contempt. Nomadic tribes were moved from one place to another in search of grazing ground. This made it difficult for them to control or identify such people, while on the other hand, they saw the settled people as peaceful and law-abiding. Thus, in order to bring nomadic and pastoralist people under their control, the British passed the Criminal Tribe Act in 1871. Though this act, communities of craftsmen, traders, and pastoralists were classified as criminal by birth and nature. They were forced to settle in one location and could not move without a permit. The village police kept a close watch on them as a result. सो ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट्स भी लगाया गया था ताकि जो है ये नोमैडिक्स और पेस्टुलिस्ट जो है एक ही जगह पे सेटल्ड रहे, इधर से उधर ना घूमे, ताकि लैंड जो है वो बचे रहे। Gazing tax. In order to increase its revenue, the colonial government imposed a tax on land, salt, canal water, and also animals. Pastoralists had to pay a tax on every animal they took to gazing in the pastures. The gazing tax was introduced in India by the mid 19th century. In the 1850s, the right to collect these taxes were auctioned off to contractors. The contractors on the part tried to extract as much tax as possible in order to recover the money they paid to the government. In order to pay less, the pastoralists had to decrease the number of animals they took for gazing. सो गेजिंग टैक्स लगाया गया। ये कॉलोनियल गवर्नमेंट इसके लिए इम्पोज किया, लैंड, सॉल्ट, कैनल वाटर और एनिमल्स पे भी इम्पोज किया गया। और ये इसके लिए इम्पोज किया गया ताकि जो है पेस्टोलिस्ट कम से कम एनिमल्स लेके जाए अपने गेजिंग के लिए। हर एनिमल पे उन्हें जो है टैक्स लगा दिया गया। ये मिड 19th सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर इम्पोज किया गया था। पहले कॉन्ट्रैक्टर्स जो है टैक्स लेते थे। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो रिकवर करते थे फ्रॉम द पेस्टोलिस्ट, और इसकी वजह से जो है पेस्टोलिस्ट को नंबर ऑफ एनिमल्स जो है डिक्रीज करने पड़े।
Next question. Give reasons to explain why a Maasai community lost their grazing land. In the late 19th century, in what would be known as the Scramble of Africa, European imperial powers slicing up the region into different colonies with little to or no regards about the local sentiments. In 1885, the land of the Mashi land, was cut into half with an international boundary between British Kenya and German Tanzania. In a as a result, the best grazing lands were reserved for white settlers, with Mashi being pushed into a small area in southern Kenya and northern Tanzania. Larger areas of grazing lands were also turned into game reserves like the Masai Mara and Samburu National Park in Kenya and Serengeti Park in Tanzania. Pastoralists were not allowed to enter these reserves. They could either hunt animals nor gaze their herds in these areas. Okay, so late 19th century के अंदर जो है स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका यूरोपियन एम्पीरियल पावर्स ने जो है डिफरेंट कॉलोनीज को विद लिटिल टू और नो रिगार्ड्स लोकल सेंटिमेंट्स मतलब उन्हें जो है रीजन्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया इन 1885 के अंदर जो लैंड ऑफ माशी लैंड जो है उसको कट ऑफ कर दिया इनटू द बाय द इंटरनेशनल बाउंड्रीज मतलब ब्रिटिश केनिया और जर्मन जानिया के बीच में बेस्ट गेजिंग लैंड जो है रिजर्व कर दिए गए फॉर वाइट सेटलर्स और विद माशी उनको जो है पुश कर दिया गया स्मॉल एरियाज के अंदर जो लार्ज एरिया था फॉर गेजिंग लैंड वाला उसके अंदर जो है उन्हें रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स बना दिए जहाँ पे उनको बिल्कुल पेस्टलिस्ट को बिल्कुल अलाउड नहीं था कि वो एंटर कर सके वो रिजर्व्स के अंदर ना तो वो हंट कर सकते थे और ना तो अपने एनिमल्स को वहाँ पे लेके जा सकते थे फॉर गेजिंग. Next question. There are many similarities in the way in which the modern world forced changes in the lives of pastoral communities in India and East Africa. Write about two examples of changes which were similar for Indian pastoralists and the Mashi herders. India and East Africa were under occupation of European colonial powers. There were many similarities in which both the regions were exploited by these powers. So first is forest laws. Various forest laws were also responsible for changing the lives of pastoralists both in India and Africa. In India, the forest was classed as reserved and protected. No pastoralists were allowed access into the reserved forest. One of the problems in the Mashi people were faced in the continuous loss of their grazing land. Colonial government increased the local peasants to expand cultivation. ओके जो फॉरेस्ट लॉ काफ़ी फॉरेस्ट लॉ जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द चेंजिंग लाइफ ऑफ पेस्टलिस्ट इन इंडिया एंड अफ्रीका बोथ. इंडिया के अंदर फॉरेस्ट लॉज लगाए फॉरेस्ट को जो है क्लासिफाइड कर दिया गया एज अ रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड एरिया और पेस्टलिस्ट जो है रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं थे. सेम जो प्रॉब्लम थी वो माशी पीपल के साथ में भी थी. उनको कंटिन्यूस लॉस हो रहा था उनके गेजिंग लैंड के अंदर. नाउ closing of borders. In Africa, Maasai land was cut into half with the international boundary between British Kenya and German Tanzania. The best land was taken over by the white settler and the locals were pushed into the small area with the restricted pasture. In India, the division of country forced the Raikas to find out the new pastures in Haryana as due to the political division they were no longer allowed to go to Sindh, which became a provision of Pakistani. The Sindh provision was become a part of Pakistan and the herders cannot go there. Okay, closing of borders. जो borders जो close हो गई है जैसे in Africa Maasai land जो है उसको cut half कर दिया with the international boundary जो British Kenya और German Tanzania ने उसके बीच में जो उनको कम कर दिया उनको स्मॉल एरियाज जो है दे दिया गया फॉर गेजिंग. वैसे एक कंट्री जैसे इंडिया के अंदर जो डिवीजन हुआ जो रायकाज है उनको हरियाणा में न्यू लैंड ढूंढना पड़ा बिकॉज वो सिंध नहीं जा सकते थे. सिंध जो है पाकिस्तान के अंदर आ गया था वो एक पाकिस्तान का पार्ट बन गया था तो वो वहाँ पे नहीं जा सकते थे फॉर
gazing. So this was chapter 5 of NCERT Solution for class 9 history. I hope you like my video. Thanks for watching my video. Thank you. Please leave comment, question or doubts in comment section if you have any, or you can drop a mail to us. You will find my email ID at the end of this video. You can also join us on Facebook page, follow us on Instagram, connect us on LinkedIn or tweet us on Twitter. Thanks for watching my video. Thank you.